गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ईसीआईज क्रैकडाउन ऑन अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेप्स इनिशिएट किए हैं डी लिस्ट करने के लिए 345 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ये जो रिकग्नाइज्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रजिस्टर्ड हैं, वो बेसिकली वो एसोसिएशंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 29A ऑफ आरपीए। लेकिन ये डिस्टिंक्ट हैं रिकग्नाइज नेशनल या स्टेट पार्टीज से, क्योंकि ये सफिशेंट वोट सिक्योर नहीं कर पाई हैं प्रीवियस इलेक्शंस में। तो इनको ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे टैक्स एग्जाम्पशन मिलती है इन्हें, कॉमन पोल सिंबल्स होते हैं इलेक्शंस के टाइम पर, और 20 स्टार कैंपेनर्स ये कैनवासिंग करने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन इन्हें क्या होता है, पीरियडिकली इलेक्शंस कंटेस्ट करने पड़ते हैं, एनुअल ऑडिट अकाउंट्स फाइल करने पड़ते हैं, डोनेशंस जो 20,000 से ऊपर की आती हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनकी कुछ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोसेस जो है शुरू कर दिया था 345 RUPP जो है उनको डीलिस्ट करने का, जिन्होंने कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा है पिछले 6 साल में, जिन्होंने कोई फिजिकल ऑफिस मेंटेन नहीं किया है, कोई रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है, स्टेचुटरी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स को भी इग्नोर किया है। तो एक पार्ट ऑफ ब्रॉडर क्लीन अप है ये, जो कि ईसीआई ने इनिशिएट किया है। 284 जो है उनको तो डिलिस्ट कर दिया गया है, 253 को इनएक्टिव डिक्लेयर कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, सभी स्टेट्स और यूटीज़ के, कि शो कॉज नोटिस दिया जाए इन पार्टीज़ को डीलिस्ट करने से पहले। तो अब आपको पता है राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल एसोसिएशन आर्टिकल 19 के अंडर कवर है। रजिस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन 29A ऑफ आरपीए एक्ट के अंदर होता है। और लेकिन जो है ईसीआई के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो इनको डी रजिस्टर कर सके आउटराइट। वो सिर्फ इनको डी लिस्ट कर सकते हैं या इनएक्टिव डिक्लेयर कर सकते हैं। ईसीआई के जो करंट एक्शन है वो सिर्फ डी लिस्ट ही करेगा इन पार्टीज़ को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पार्टीज एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स, ठीक है। और फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, बहुत सी ये पार्टीज़ जो है वो 100% टैक्स एग्जाम्पशंस ले रही थी डिस्पाइट नॉन कंप्लायंस, शेल एंटिटीज़ की तरह काम कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में, नॉमिनेशंस को अपने सेल करके जो है डमी कैंडिडेट्स को पैसे उनसे जो है वो विड्रॉ जो है एक्सट्रैक्ट कर रही थी। जब इनको डीलिस्ट कर दिया जाएगा तो ईसीआई जो है वो चाहते हैं कि वो ब्लॉक करें मिसयूज़ ऑफ पब्लिक ट्रस्ट और स्टेट सैंक्शन बेनिफिट्स को। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईसीआई को एम्पावर करके इनको डी रजिस्टर करने की भी पावर ईसीआई को दी जाए। इवन ईसीआई ने भी 2016 में इलेक्टोरल रिफॉर्म मेमोरेंडम में ये कहा था कि हमें ये पावर होनी चाहिए। लैक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो है वो एक अनरिजॉल्व कंसर्न है, ठीक है। तो 170th और 255th लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स जो हैं वो कह रही हैं स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स होनी चाहिए आरपीआई एक्ट में कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी लाई जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीपीएस इंटरफेरेंस थ्रेटनिंग शिप्स एंड फ्लाइट्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स देखे गए जिसमें जैसे कि एक दिल्ली जम्मू फ्लाइट जो है वो उसको वापस आना पड़ा, टैंकर कोलिजन हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और एक कंटेनर शिप ग्राउंड हुआ नियर जद्दा। ये सब जो है जीपीएस इंटरफेरेंस की वजह से कॉज हुए हैं। जीपीएस इंटरफेरेंस क्या होता है, डेलिबरेट साइबर अटैक्स जो डिसरप्ट या डिसीव करते हैं जीपीएस सिग्नल्स को। तो ये दो तरह के होते हैं, जीपीएस जैमिंग, जीपीएस स्पूफिंग। जैमिंग में तो क्या होता है, एक जैमर डिवाइस का यूज़ करके जो है जीपीएस फ्रीक्वेंसीज को रोक दिया जाता है, ओवर पावर कर देते हैं ये वीकर सैटेलाइट सिग्नल्स को, जिसकी वजह से जीपीएस रिसीवर जो है उनको लोकेशन और टाइम डेटा नहीं मिल पाता है। तो काइंड ऑफ ये सिग्नल डिसरप्शन है। जीपीएस स्पूफिंग इससे भी खतरनाक होती है, जिसमें कि फॉल्स सिग्नल्स दिए जाते हैं जीपीएस सैटेलाइट्स के थ्रू जो लगता है रिसीवर को, और स्पूफिंग जो है वो ब्लॉक नहीं करता बल्कि मैनिपुलेट कर देता है उन सिग्नल्स को। तो जैमिंग से तो जीपीएस की फंक्शनैलिटी डिसरप्ट होती है, लेकिन स्पूफिंग से तो मिसलीड हो जाता है रिसीवर। दोनों सीरियस थ्रेट जो है वो नेविगेशन और सेफ्टी को पोज करते हैं। तो जीपीएस इंटरफेरेंस एक सीरियस थ्रेट है सिविलियन और मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों के लिए। 2024 में रिपोर्ट्स थी कि 700 जीपीएस स्पूफिंग इंसिडेंट्स डेली वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट किए गए। स्पूफिंग से जो है मिसलीड हो जाते हैं पायलट्स। और शिप्स के लिए क्या होता है कि जीपीएस की एक्यूरेसी जब लॉस होती है तो उससे ग्राउंडिंग्स, कोल्यूजन या डिसरप्शन ऑफ मैरीटाइम ऑपरेशंस का खतरा बना रहता है। इवन ये रोड नेविगेशन को भी डिसरप्ट कर सकता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पोर्ट ऑपरेशंस और वेसल ट्रैफिक सिस्टम जो है हाईली डिपेंडेंट होते हैं जीपीएस के लिए। अगर इंटरफेरेंस होती है तो ये सिस्टमेटिक फेलियर्स हो जाते हैं इन सेक्टर्स में। तो
क्या मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं जीपीएस इंटरफेरेंस के? तो नेचुरल और इंटेंशनल दोनों होते हैं ऑफ कोर्स। कई बार जो है नियर बाय डिवाइसेस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और आयोनोस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस जो सोलर फ्लेयर से होती हैं वो भी कर सकती हैं ऐसा। लेकिन कई बार डेलिब्रेट जैमिंग और स्पूफिंग भी होता है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में। कंट्रीज़ जिनके पास एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं और वो एक्टिव कन्फ्लिक्ट्स में हैं, वो इस ऐसी इंटेंशनल इंटरफेरेंस कर देती हैं। ठीक है, मैरीटाइम जीपीएस इंटरफेरेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है रीजनल टेंशंस की वजह से पर्शियन गल्फ और रेड सी में। अब कैसे मिटिगेट किया जाता है जीपीएस इंटरफेरेंस को? इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो हैं उनका यूज़ किया जाता है, मतलब गायरोस्कोप्स और एक्सेलेरोमीटर्स का, ताकि पोजीशन को कैलकुलेट किया जाए लास्ट नोन लोकेशन से। फिर ग्राउंड बेस्ड रेडियो नेविगेशन एड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं पायलट्स को क्रॉस चेक करने के लिए अपनी पोजीशन को। फिर जो है डेड रेकनिंग और सेलेस्टियल नेविगेशन का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेड रेकनिंग मतलब कि अपनी पोजीशन को एस्टिमेट करके डायरेक्शन और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो देखना। और जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं स्पूफिंग से, इसलिए सेफ लैंडिंग इंश्योर हो पाती है। डीजीसीए ने मैंडेट किया है कि क्रू की ट्रेनिंग एडवांस की जाए, एनहांस की जाए ताकि वो आइडेंटिफाई और रिस्पॉन्ड कर सकें स्पूफिंग थ्रेट्स को। शिप्स टिपिकली ऑपरेट करती हैं ऑटो पायलट पर जीपीएस का यूज़ करते हुए, लेकिन स्पूफिंग जो है वो उन्हें मैनुअल पर स्विच करने के लिए मजबूर कर देती हैं। टेरेस्ट्रियल नेविगेशन जो है वो लाइट हाउसेज, रडार्स या पेपर चार्ट्स के थ्रू जो है वो करके सिचुएशनल अवेयरनेस ली जा सकती है। तो अपार्ट फ्रॉम जीपीएस, रशिया का ग्लोनास भी है, ईयू का गैलीलियो भी है, चाइना का बीडू भी है। उन सब को भी यूज़ किया जा सकता है ताकि किसी भी एक सिंगल सिस्टम पर जो है वो डिपेंडेंसी ना हो। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फुटबॉल फॉर स्कूल स्कीम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जो है उन्होंने प्रिसाइड किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीफा फुटबॉल्स की गई हैं फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम के अंडर केंद्रीय विद्यालय में। तो ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है फीफा का कोलैबोरेशन विद यूनेस्को के साथ। एजुकेशन, डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ अराउंड 700 मिलियन स्टूडेंट्स करने का इसका मोटिव है, और फुटबॉल को मोर एक्सेसिबल टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स बनाना चाहते हैं। टारगेटेड लाइफ स्किल्स और कॉम्पिटेंसेस जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं ये। तो ये अलाइंड है ग्लोबल स्पोर्ट, एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसीज़ के साथ। इसमें लर्नर्स को एम्पावर किया जाना एक ऑब्जेक्टिव है। कोच एजुकेटर्स प्रोवाइड करना, कैपेसिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स बिल्ड करना, कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट स्ट्रेंथन करना। मिड 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी विद सपोर्ट फ्रॉम AIFF एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीबीएसई ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फ्रॉम पुअर फैमिलीज़ की वो अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस जो है वो मीट कर सकें वाइल परसुइंग हायर स्टडीज़। ये स्कॉलरशिप जो है अवार्ड की जाती है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ हायर सेकेंडरी और क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। मैक्सिमम ऑफ 82,000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। और ये टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो हैं डिवाइड होती हैं अमंग स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स बेस्ड ऑन स्टेट्स की पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 ईयर्स। 12,000 पर एनम ग्रेजुएशन लेवल पर, 20,000 पर एनम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, ये जो है स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र के थ्रू ये स्कॉलरशिप्स पे की जाती हैं। तो एप्लीकेंट जो है वो कम से कम रेगुलर डिग्री कोर्सेज में एनरोल होना चाहिए। कॉलेज इंस्टीट्यूशंस जो कि AICTE से रिकॉग्नाइज्ड हैं उनमें वो एनरोल होने चाहिए। ग्रॉस पेरेंटल या फैमिली इनकम जो है वो 4.5 लाख रुपए पर ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और उनको ये अगर जो है स्कॉलरशिप रिसीव करते रहनी है तो उनको मिनिमम 50% जो है वो मार्क्स एनुअल एग्जामिनेशन में लेते रहने चाहिए, और एडुकेट अटेंडेंस होनी चाहिए 75% तक की। और स्टूडेंट्स को बैंक अकाउंट्स ओपन करने होते हैं अपने नाम में जिसमें स्कॉलरशिप आती है। स्टूडेंट्स जो कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन परसू कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं इसके लिए।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं खासी पीपल। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मेघालय हाई कोर्ट ने रिसेंटली एडमिट की है एक पीआईएल जो डिटर्मिन करेगी फेट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल सर्टिफिकेट एप्लीकेशंस का फ्रॉम खासी कम्युनिटी। खासी पीपल जो है वो इंडिजिनस ट्राइब हैं, प्राइमरली खासी और जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय में रह रहे हैं, इंडियन स्टेट ऑफ असम, और इवन कुछ तो हैं वो बांग्लादेश में भी रहते हैं। और कहा जा रहा है कि ये और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में तिब्बत या बर्मा से आए हैं अराउंड 500 बीसी के बाद। और ये जनरली शॉर्ट स्टेचर के होते हैं लोग। खासी लैंग्वेज इनकी पार्ट ऑफ इंटीग्रल आइडेंटिटी है। इनकी जो लीनेज और इनहेरिटेंस है ये मदर साइड ऑफ फैमिली से जानी जाती है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो क्रिश्चियंस बन चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी हिंदूज़ और मुस्लिम्स भी हैं। कल्टिवेशन इनका प्राइमरी सोर्स है फॉर लाइवलीहुड। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इन्हें मिला हुआ है इंडिया में, ताकि अपने कस्टमरी लॉज को प्रैक्टिस कर सकें, और इनको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसीलिए। खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है इनकी ऑफिशियल बॉडी है इनके यूनिक लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है इनके कनेक्शन विद नेचर का वो है लिविंग रूट ब्रिजेस। वो आपने देखे होंगे, जिसको फिकस इलास्टिका ट्री का यूज़ करते हुए स्पेसिफिक डायरेक्शन में ग्रो किया जाता है एक तरह से। और ये ब्रिजेस जो हैं वो 100 फीट तक बढ़ जाते हैं, और ये कई सेंचुरीज तक इनको बना के रखा जा सकता है ऐसे। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is ECI's crackdown on unrecognized political parties. This topic is important for your polity and governance section. So Election Commission of India has initiated steps to delist 345 registered and unrecognized political parties, or RUPPs. So these RUPPs are basically associations which are registered with the Election Commission of India under Section 29A of RPA, but they are distinct from recognized national and state parties because they have not secured a sufficient vote share or seats in previous elections. So RUPPs still enjoy certain benefits like tax exemption, eligibility for common poll symbols, and permission to nominate up to 20 star campaigners for canvassing. However, they are required to contest elections periodically. They have to file on annual audit accounts and contribution reports. They have to disclose donations which exceed 20,000 rupees. Election Commission of India has initiated the process of delisting these 345 RUPPs, which have not contested even a single election in the last 6 years. They have failed to maintain physical offices at their registered addresses. They have ignored statutory filing requirements, including financial disclosures. This is part of a broader cleanup initiated by the ECI, and since the last 2 years, 284 RUPPs have been delisted and 253 have been declared inactive for failing to comply. ECI has tasked the chief electoral officers of the respective states and UTs to issue show cause notices to these parties before delisting them. So we all know that right to form a political association is protected under Article 19 of the Constitution, and registration is governed by Section 29A of RP Act. Okay, so there is a legal vacuum, which means that ECI can delist or declare parties inactive, but it cannot deregister them outright. ECI's current action will be limited to delisting RUPPs from the list of parties eligible for benefits, but they will not be erased as legal entities. Many of these parties were found to be availing 100% tax exemptions despite non-compliance. They were operating as shell entities. They were selling nominations by fielding dummy candidates. By delisting these entities, ECI aims to block the misuse of public trust and state-sanctioned benefits. Even Law Commission of India in its 255th report has recommended empowering the ECI to deregister these parties who failed to contest elections for 10 consecutive years. ECI has also echoed this as a reform in its 2016 Electoral Reform Memorandum. Uh, Additionally, lack of inner party democracy remains an unresolved concern. Both 170th and 255th Law Commission reports have called for specific amendments to RPA Act to instill internal party democracy. So the next topic is GPS interference threatening ships and flights. This topic is important for your economy section and also your social issues. So recent incidents like the Delhi Jammu flight turning back, a tanker collision at the Strait of Hormuz, and a container ship grounding near Jeddah, they were all caused by GPS interference. So GPS interference refers to deliberate cyber attacks which disrupt or deceive GPS signals. So there is
there are two forms of GPS interference. First is jamming, and then there is spoofing. So in jamming, it involves the use of jammer device which emits strong radio signals on GPS frequencies. These signals overpower the weaker satellite signals, causing GPS receivers to lose location and time data. So this is kind of signal disruption. In GPS spoofing, it is even more threatening because it uses a device to transmit false signals which mimics those from GPS satellites. And unlike jamming, spoofing does not block signals, it manipulates them. So jamming disrupts GPS functionality, whereas spoofing misleads the receivers. So both pose serious threat to navigation and safety in air and sea operations. So GPS interference poses a serious threat to both civilian and military operations. In 2024, there were reports of up to 700 GPS spoofing incidents daily worldwide. Spoofing can mislead pilots. For ships, loss of GPS accuracy can lead to groundings, collisions, and disruptions of maritime operations. GPS spoofing can also harm the road navigation. Okay, so air traffic control, boat operations, and vessel traffic systems are highly dependent on GPS. Interference can cause systemic failures in these sectors. So, GPS interference can arise not just from the human uh, sources or intentional sources, but also from natural sources like electromagnetic radiation from nearby devices. Sometimes ionospheric disturbances also occur from solar flares. But there are sometimes deliberate jamming and spoofing in conflict zones, especially countries who have advanced electronic warfare capabilities and they are in active conflicts. They go for intentional interference. Maritime GPS interference has surged due to regional tensions as well in Persian Gulf and Red Sea. So, how aircrafts mitigate the GPS interference? They use gyroscopes and accelerometers to calculate position from the last known location. Ground based navigation aids also help pilots to cross check their position. Dead reckoning, which is the process of calculating one's position by estimating the direction and distance traveled, is also used. Then, instrument landing systems also remain unaffected by spoofing and therefore they ensure safe landings. DGCA has also mandated that crew training must be enhanced so as to identify and respond to spoofing threats. Ships which typically operate on autopilot use GPS, but spoofing forces them to switch to manual, and terrestrial navigation is then adopted using lighthouses, radars, and paper charts. So, apart from that, we have to minimize our dependency on GPS because we have other global navigation satellite systems as well, like Russia's GLONASS, EU's Galileo, China's Baidu. Okay, we also have India's Navik. Okay, so this is important that manual navigation and GNSS diversification in ships is important. National autonomy can be achieved through indigenous systems like Navik. So the next topic is Footballs for Schools scheme. This topic is important for your governance section. Recently, Union Minister of Education has presided over the distribution of FIFA footballs as part of the Football for Schools program at PM Shri Kendra Vidyalaya. Okay, so this is an important ambitious program run by FIFA in collaboration with UNESCO. The aim is to contribute to education, development, and empowerment of around 700 million students and to make football more accessible to both boys and girls. It has been designed to promote targeted life skills and competencies through football. This program is aligned with global sports, education, and health policies. The aim of the program is to empower learners, empower and provide coach educators, build the capacity of stakeholders, and strengthen the cooperation between governments. So this program was launched in the mid 2019, and in India it is implemented by Department of School Education and Literacy with support from All India Football Federation and Sports Authority of India. So the next topic is Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsahan. This topic is important for your governance section. CBSE has recently announced the central sector scheme of scholarship for college and university students. So this is a scholarship by the Department of Higher Education, which aims to provide financial assistance to meritorious students from poor families to meet a part of their day-to-day expenses while pursuing their higher studies. So these scholarships are awarded based on the results of higher secondary and class 12th board examinations. A maximum of 82,000 fresh scholarships are provided for pursuing
graduate and postgraduate degrees in colleges and universities. And this number of scholarships is divided amongst the state education boards based on the state's population in the age group of 18 to 25 years. 12,000 rupees per annum at the graduation level for the first 3 years of college and university courses are given. Then 20,000 rupees per annum at the post graduation level is given. Okay, and this subsidy is dispersed through direct benefit transfer. Applicant must be pursuing regular degree courses. Applicant must be pursuing courses at the colleges institutions which are recognized by the AICTE and their respective regulatory bodies. Gross parental or family income must not be more than 4,50,000 per annum, and they should get at least 50% marks in the annual examination, and they must maintain adequate attendance of about 75%. They must the students must open bank accounts in their name. Okay, students who are pursuing the correspondence or distance mode of education or diploma courses, they are not eligible for these scholarships. So the next topic is Khasi people. This topic is important for your social issues. So Meghalaya High Court has recently admitted a PIL which could determine the fate of hundreds of tribal certificate applications from the Khasi community. So Khasi people are an indigenous tribe primarily living in the Khasi and Jaintia hills of Meghalaya. They are present in the Indian state of Assam and even in neighboring country of Bangladesh. They are believed to have migrated to the northeastern hills from Tibet or Burma around 500 BC. They are generally people of short stature. The Khasi language is an integral part of their identity. Of course, they also speak English and Hindi. In Khasi culture, lineage and inheritance are passed down through the mother side of the family, which means that they are matrilineal society. A vast majority of them are Christians, but some of them are Hindus and Muslims also. Cultivation has been their primary source of livelihood for ages. They enjoy the scheduled tribe status in India, and they have certain privileges, like they are allowed to practice their customary laws, and they also enjoy tax benefits. Uh, Khasi Hills Autonomous District Council is the official body protecting the unique laws of these people. The most famous example of Khasi tribe's connection to nature is the living root bridges, which we have all seen. They are formed by training the roots of Ficus elastica tree to grow in a specific direction, creating sturdy natural bridges. And these bridges can span up to 100 feet, and they are known to last for centuries. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.